Hi students, welcome back to my channel. Now today here continuing with the asexual reproduction in animals. Earlier we have studied the various methods of asexual reproduction in plants. Now what are the various methods of asexual reproduction in animals? Though in case of animals asexual reproduction rarely occurs, it occurs only in the very lower organism aquatic or where the differentiation of the body parts is not much more. Only just they are multicellular or just the division of labor has gone over it. Under this various method, the first one, that is the binary fission, as you have seen over there in the plants also. In binary fissions, lower organelle amoeba, paramecium, euglena, they are unicellular, they are made up of a single cell only. Here, when the cytoplasmic content increases, then what happens? And the single nucleus is not able to control all the life activities of the cell. जब अमीबा जो यूनिसेलुलर है उसका न्यूक्लियस जो है उसके बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तब क्या होता है? न्यूक्लियाई स्टार्ट्स डिवाइडिंग इनटू टू and the cytoplasmic contents are also started dividing into two parts, and later on the cytoplasmic content divides, nuclei divide, and then this single nucleus is bifurcated into two, and the cytoplasmic content also separates, plasma membrane separates, and the two new individual amoebae is formed. As you can see it here, the single nuclei, the cytoplasmic content increases, then it enlarges in the size, and the nucleus divide. When the nucleus divides, moves towards the opposite pole, and the single one, other cytoplasmic contents, contractile vacuole, food vacuole, and the vacuoles, they are also divide, ectoplasm, endoplasm, everything divides, and two daughter amoebae develop, and both of them acts as in free living organism. Protozoans, they are found in free water, fresh water, even in the marine also, in the oceans also, seas also, salty water, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं अमीबा, जहाँ कभी होता है. They are the unicellular. Next way of budding, as you have already seen, budding, it is also acts in aquatic animals. That takes place only in the marine, that is in the sea animals. Animals, lower animals which are found in the seas, as in the coelentrates, porifers, all these animals are there. In these animals budding, whatever the extra budding is there, this is the coelenterate body, they are the tentacles, it is a plant body. Here what happens? An outgrowth appears. When an outgrowth appears, it extends, and later tentacles also develop. Later on it is bifurcated and it acts as a whole individual. Now this individual separated also acts as an individual. Now this, through this bud, the new organism arises. This takes place in lower. Yeast है, sponges हैं, sponges that comes on your porifers, and your hydra, yeast that is in the bacteria, lower organism, all they are the unicellular organism. Yeast also the budding occurs, the same process is there, the external structure outgrowth appears. Now this outgrowth appears, develops into the, मतलब इस बिल्कुल ठीक इसी तरह से इसमें भी एक आउटग्रोथ होती है, आउटग्रोथ से बड़ी होके पूरे कंटेंट बन जाते हैं, उसके बाद या तो उसमें अटैच रहेगी या उससे डिटैच हो जाएगी. तो ये भी लोअर एनिमल्स हाइड्रा यीस्ट है. नेक्स्ट यू हैव द रीजनरेशन. वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट रीजनरेशन, यानी दोबारा पैदा होना, फिर से डेवलप करना. अगर हाइड्रा दो पार्ट्स, अगर मान लीजिए दो की नहीं है, मान लीजिए ये चार पार्ट्स में भी डेवलप हो जाता है, चार पार्ट्स में भी कट जाएगा, तो चार पार्ट्स में कटे, हर पार्ट जो है इंडिविजुअल हाइड्रा की तरह डेवलप हो जाएगा. एंड दे आर ऑल्सो मराइन, हाइड्रा है, अर्थवॉर्म, स्टारफिश, एकाइनोडर्मेट्स, देयर ऑल्सो द रीजनरेशन अकर्स. अर्थवॉर्म जो कि आपका एक्वेटिक मल्टीसेलुलर है, जिसमें ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन सबकी फंक्शनिंग प्रॉपर अभी नहीं स्टार्ट होती है. कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन भी ऐसे थे, इसलिए अर्थवॉर्म जो है मिट्टी ही खाता है और मिट्टी ही निकलता है. उस मिट्टी में ही क्या होता है, जो सड़े गड़े पदार्थ, पत्तियां वगैरह होती हैं, ड्राइड लीव्स होती हैं, उसको वो ईट करता है, उसे खाता है. तो वो उसके अंदर कुछ जूसेस स्टार्ट होते हैं, तो उस जूसेस में से निकल करके मैनेज होकर के फिर वो मिट्टी ही निकलती है बाहर. तो वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसमें डाइजेस्ट, और जो वो मिट्टी निकलती है, बिकॉज इट इज एनरिच्ड इन द डाइजेस्टिव एंजाइम, so it increases the fertility of the soil, and that's why earthworm is known as the friend of farmers.
बरसात के महीने में आप देखते हैं रेनी सीजन में होता है, तो ये आपको बाहर, क्यों, ये मिट्टी में रहते हैं, बिल के अंदर रहते हैं। बरसात में रेनी सीजन में क्या होता है, इनके बिल में पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो ऑटोमेटिकली इनको बाहर आना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा ब्लडस मूवमेंट होता है, सीटी लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, इसमें मेल और फीमेल, ये बाइसेक्शुअल होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे स्टारफिश है, स्टार द वर्ड इटसेल्फ स्टार शेप्ड बॉडी, अगर कहीं भी दो बीच में पार्ट्स में कट जाएंगे तो दोनों पार्ट जो है पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। दैट इज द स्टारफिश। द नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स, पार्ट्स। अगर कोई एनिमल अपने बॉडी पार्ट्स में 2 या 3 पार्ट्स में, लोअर एनिमल जैसे आपका प्लानेरिया है, फर्मेंटेड स्पंजेस हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, we have all studied in the classification of the animals that are known as flatworms, ascaris है, ये सब। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये फ्लैटवर्म है, तो ये 3 जगह से कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन होकर के ये तीनों अलग अलग पार्ट्स में डेवलप हुए और ये तीनों ही इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। स्पंजेस में भी होता है, जैसे स्पंजेस होते हैं यहाँ पे, स्पंजेस भी अगर 2 या 3 पार्ट में कट जाएंगे तो हर पार्ट फुल स्पंज अपने आप में डेवलप हो जाता है। तो एक तो इन केस ऑफ एनिमल्स, दो इट इज सीन ओनली इन द फीवर एनिमल्स, क्योंकि मोस्ट प्रोमिनेंट reproduction in animals is that is the sexual reproduction, but in asexual reproduction only these 5 processes are seen over here, that is your binary fission है, budding है, regeneration है, fragmentation है, ये सब है। तो main characteristics, only one parent is required, it involves only one parent, no gametes are formed, and if gametes are not formed then the fertilization will also not occur, no fertilization, and it is of the various method, इट इज वेरियस, जैसे बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, अलग अलग तरह के कई प्रोसेस के थ्रू ये होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नाउ वी कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन केस हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट, इन प्लांट्स द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लावर, that I have already discussed in your previous videos. For that you go and refer to my video, structure of flower, parts of flower. Then in the flower, stamen, male reproductive unit, it consists of anther and filament. Female reproductive units, that is stigma, style and ovary. Flower, calyx, corolla, androecium, gynoecium. Calyx and corolla, they are non-essential part because they do not take parts in reproduction. Essential parts, that is the androecium and gynoecium. Androecium consists of anthers. Anthers, they are made of stamens. Androecium consists of stamens. Stamens, they are made up of anther and filament. In anther, the formation of the pollen grains occur, that is the male reproductive unit. In case of stigma, style, ovary, as you see in the flower, the stigma, style and ovary. Here is the ovule present, this is stigma. This is a style and this is the ovary. This is the female reproductive part of the flower, and the male reproductive part that you had anther, this is called stamen. This is anther and this is filament, isn't it? Now here pollen grains are formed. Pollen grains are transferred through the pollination, various method, maybe by air, maybe by in aquatic plants through the water, birds, insects, anyway. They are transferred, fertilization occur, post-fertilization changes takes place, formation of seed, formation of fruit. All I have discussed in you can see in my previous videos, parts of flower, fertilization, post-fertilization changes, pollination, artificial pollination, various methods of pollination, everything I discussed over there. You watch my video over there. Again, you can see that how the sexual reproduction takes place in plant. Now, in my next video, I will discuss with how sexual reproduction takes place in animals. Thank you. Again, we will meet in the next video.